in kingdom fungi, right, that we have learned the three types of reproductions are there. Vegetative reproduction, second asexual and sexual reproduction. Vegetative by fragmentation, then budding. Asexual reproduction, in that which spores? Conidiospores. Sporangiospore, zoospores, right? These structures are formed. And in case of sexual reproductions, oospores, ascospores, and yes, these structures are formed, right, in their particular fruiting body. Now, next one, when a fungus reproduce sexually, right, fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types that come together and fuse over here, come together and fuse. ये theory दिया है, right? Understand with the help of this picture. In that, two fungal hyphae are there, right? You know what is hyphae? Single filamentous slender long structure we call hyphae, and the group of hyphae we call, or mass of mycelium. So fungus live in this form, yes or no? Now, so out of these two, suppose here this one hyphae, at the same time second hyphae, one more hyphae is there of the same species, right? Fungus are so many types are there. So now from this group, man, look at these two hyphae, they are compatible with each other for sexual reproduction. Compatible meaning suitable for sexual reproduction, right? Now, these are the hyphae. Hyphae can be aseptate or septate. Hyphae can be now over here two hyphae are made. Can you make out this thing? Right? Same species के ही है. Just I am making one different color over here. One in a green color, other with this blue. Right? During that sexual reproduction time, right, these two compatible hyphae in certain cell, right, they form this type of structure. In that cytoplasmic extension occur. Cytoplasmic what? Extension occur, and they form this type of swollen structure, right? Gradually, so यहाँ से two hyphae are there. This hyphae form this swollen structure. This hyphae form this swollen structure. Gradually, this both are behaves as a what over here? Gametes. Both are behaves as a what? Gametes. Both are behaves as a what? Gametes. This is the plus strain. This is the which one? Minus. One strand we consider plus, other strand we consider minus. इसमें हम male female नहीं बोल सकते. That's why. Clear? Here जैसे बैक्टीरिया में भी यही word use करते हैं, plus strain, minus strain, like that. So now here that's the plus strain form this gamete. ये extension करके they form what? Gametes, right? And same this other strand also form what? Gamete. Can you make out? Here still both are separated, but now which event occur? Plasmogamy. समझ में आ रहा है? Both the cells over here, this gamete basically cells, they fuse with each other, right? So first they fuse with each other, that we call the what? Plasmogamy. Second, plasmogamy हुआ. If you can make out this type of structure, and in that two nuclei are there separately, right? Plasmogamy leads to next event, karyogamy. Isn't it? Plasmogamy leads to karyogamy. Now, fungus in kingdom fungi, we will learn 4 classes. Kingdom है, kingdom के अंदर further कौन सा category आ रहा है अभी? Classes, right? सारे categories नहीं learn करने इसके, directly classes. So kingdom fungi in that further category, that's the classes. Total how many? 4. Few classes are there. In that what happened? Plasmogamy as and when occur, but immediately karyogamy does not occur. Immediately क्या नहीं हो रहा है? Karyogamy. 2 cells are there. These cells fuse with each other. So now structure looks like this. Yes or no? दोनों के nucleus है.
right? Both nuclei initially remain what? Separated. They do not show what? Fusion, right? In some of the fungus, remember, plasmogamy does not follow immediately what? Karyogamy, right? So एक ही cell अभी बन गए. When two cells fusion occur, now only one cell is there. But in one cell, how many nuclei are there? Two nuclei, and this two nuclei stage we call dikaryophase. इसका मीनिंग बता सकते हो अभी आप? डाई का मीनिंग टू, कैरियन मीनिंग न्यूक्लियस. सो टू न्यूक्लियस कैरिंग फेस, टू न्यूक्लियस कैरिंग फेस. क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? सो नाउ अंडरस्टैंड two different strains of that's a fungal filament hyphae basically. In that they are compatible or non-compatible? They are compatible, right? When they form these gametes, first which event occur? Plasmogamy, right? Which event? Plasmogamy. Here plasmogamy immediately follow that karyogamy? No. अभी जो हम learn कर रहे हैं that plasmogamy does not follow immediate event, that is the karyogamy. So two nuclei for certain time of period they remain separated. They remain what? Separated. Now this once this dikaryon phase is formed, right? Once the dikaryophase is formed in this single cell, this cell further undergoing mitosis. किसमें जाएगा? Mitosis. And one cell से two cell, two to four cells, like that structure is formed. नहीं, अब जाइगोट बनाया हमने? नहीं. तो अभी तो कैरियोगैमी पे ही नहीं है. समझ में आ रहा है? राइट? यहाँ पे एक्स्ट्रा इवेंट्स है. सो फर्स्ट प्लाज्मोगैमी इज देयर. सेकेंड स्टेज यहाँ पे क्या आ रहा है? विच वन? डाइकैरियोफेज. Once the dikaryophase in single cell is formed, right? This one undergo what first? Mitosis and form. जितने भी इससे न्यू सेल्स बनेंगे सभी में कौन सा फेज होगा? डाइकैरियोफेज. अभी सब में दो न्यूक्लियाई है. यस और नो? डाइकैरियोफेज इज देयर. टॉपमोस्ट सेल जो इसका होता है जनरली इट परफॉर्म्स 2 to 3 times माइटोसिस. फिर उसके बाद माइटोसिस स्टॉप हो जाता है. सो द टॉपमोस्ट सेल over here, in that can you make out over here? आपको दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहाँ पे? Here also topmost cell will undergo in a specific shape, change हो रहा है, right? And now what happened? This two nuclei over here fusion. Two nuclei का क्या हो रहा है? Fusion. So sequence is what? First, one more time, that's the two compatible hyphae are there. Yes or no? Two compatible hyphae. This two compatible hyphae form what? Cytoplasmic extension. Through they form gametes. So first event यहाँ पे कौन सा आएगा? Plasmogamy. So first they form plasmogamy structure. How many nuclei? Two nuclei. In this two nuclei, right? अभी सेंटर में ये बना. Over here, that's this two compatible hyphae are there. Yes or no? Right? This is the plus strain. This one is a which one? Minus strain. Right? Now in specific cell, this extension process starts. Clear? So now both will undergo what first event is a which one? First event, that is the plasmogamy. And this stage we call dikaryophase, right? Now in the dikaryophase, further, that's the further mitosis occur. So mitosis जब further हो रहा है over here, 1 से 2 cells, 2 to 4 cell, और हर एक में कितने न्यूक्लियाई? 2, right? So ये जो hyphae filamentous structure बन रहा है, that is dikaryotic hyphae. That is dikaryotic hyphae. आप पेरीफेरी पे देखिए सिंगल ही न्यूक्लियस है. अंडरस्टैंड? बाद में सब ड्रॉ करना. फर्स्ट
over here ये हम parental hyphae consider करेंगे, right? They are uninucleated, but over here once the dikaryophase is formed, dikaryophase will undergo mitosis and form right now 4 cells. The topmost cell over here that will undergo differentiation. Topmost cell will undergo which one? Differentiation in this way, right? उसका shape different होता है. हम क्लासेस लर्न करेंगे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. इन दैट वी विल लर्न किसी में एस्कस शेप बनता है, किसी में बेसिडियम, राइट? सो हियर दिस टाइप ऑफ शेप इज फॉर्म, इसको एस्कस बोलते हैं. एंड टू न्यूक्लियाई ओवर हियर दैट फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म व्हाट? जाइगोट. एंड फॉर्म व्हाट? जाइगोट. समझ में आया? तो यहाँ पे डाइकैरियोफेज था, yes or no? Yes. This is the which phase? Dikaryote. अभी सिर्फ topmost cell in that two nuclei fusion, to which event occur? Karyogamy event occur. Which one? Karyogamy. Clear? Karyogamy, zygote बना. You know zygote will undergo meiosis. Zygote will undergo which one? Meiosis. So now in this ascus, this zygote will undergo meiosis. Meiosis, 2 rounds of meiosis are needed. You know, one cell that divides into first 2 daughter cells, meiosis 1, and then meiosis 2. 4 daughter cells will be formed. Clear? So now, initially कितने cells form होंगे? 1, nuclei form होंगे 2, right? Next one, इसका further meiosis, ये हुआ meiosis 1, ये हुआ meiosis 2. Meiosis 2 के बाद over here, after the meiosis 2, how many cells? 1, 2, 3, 4 nuclei are formed, right? यहां तक clear है story? Yes or no? Yes. बोलो. Once these 2 cells are fused with each other, that is plasmogamy. And plasmogamy occurs. Plasmogamy के बाद क्या होता है actually? Karyogamy. But in some of the fungus, the plasmogamy does not immediately follow what? Karyogamy. तो 2 nuclei cells fuse हो गए, but 2 nuclei remain as it is. They do not fuse with each other. जब तक वो fuse नहीं हो रहे, तब तक एक ही सेल में हमें 2 nuclei मिल रहे. This is the dikaryophase. Clear? 2 nuclei containing phase we call dikaryophase. फिर dikaryophase अपने आप माइटोसिस करके खुद का एक फिलामेंट बनाएगा, right? And the topmost cell in that karyogamy takes place. Topmost cell में क्या होता है फिर? Karyogamy. That karyogamy leads to zygote formation. Zygote will undergo meiosis, and by that way how many nuclei will be formed? 4 haploid. हाँ, that's a basic. पहले nuclei form हुआ and on that the further cell wall formation. So 4 haploid spores will be formed, right? ये spores sexual होंगे या asexual? Sexual, because 2 different hyphae are involved in that, right? एक ही hyphae से अगर कुछ बनता तो वो क्या बन जाता? Asexual. But here 2 hyphae are involved, that's why we call it a sexual reproduction. समझ में आया? Yes or no? Clear है यहाँ तक? Now, so here the same thing is given. Can you make out? First 2 hyphae, next after that plasmogamy. यहाँ पे plasmogamy हो गया, first they form the gametes. Then plasmogamy के बाद कौन सा phase है? Dikaryophase. In that mitosis occur, filament length will be increased. Topmost cell में कौन सा event होगा? Karyogamy. Topmost में क्या हो रहा है? Karyogamy, and by that way it forms zygote. Fusion से form करेगा zygote. Zygote will undergo meiosis 1, then meiosis 2. यहाँ तक clear है? And by that way how many spores will be formed? Sexual spores will be formed. 4 sexual spores will be formed. This is the type of the sexual reproduction in fungus. Clear? This one? Yes. Over here, this one, no? This is the topmost cell of dikaryotic hyphae.
topmost cell in that which event occur? Karyogamy. Once the nuclei fuse, now the zygote will form. So zygote form हुआ. Zygote will undergo meiosis. Zygote will undergo meiosis. Meiosis के 2 rounds है, meiosis 1, meiosis 2. Ultimately उसमें कितने haploid spores form होते हैं? 4 haploid spores will be formed. Clear? Sure. See that when a fungus reproduce sexually to which hyphae? Haploid. Remember, fungal body haploid होता है. We are diploid or haploid? We are diploid or haploid? We are diploid or haploid? आपको इसका मीनिंग पता है पहले? Yes or no? Diploid meaning 2 sets of chromosomes. Diploid meaning 2 sets of chromosomes. We have how many chromosomes? 46. कहाँ से आए? From मम्मी, from parents, right? सिर्फ फादर ने दिए, मदर ने दिए और both have given equal. 23 chromosomes given by mother, 23 chromosomes given by. So 23 के हमारे पास कितने sets है? 2 sets. That's why we are diploid. Clear? Here which word is mentioned? Haploid. Haploid word is there. Meaning what over here? That's the fungal body has single set of chromosome. Fungal body has single set of chromosome. Clear? Yes or no? Fungal body has single set of chromosomes. Understood this? Yes or no? Right? So now, when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately follow the diploid cell. I told you 4 classes are there, but in that some members plasmogamy follow that. Plasmogamy immediately karyogamy. But some members first plasmogamy करेंगे, फिर कौन से स्टेज में चले जाएंगे? Dikaryo, and then follow karyogamy, and then zygote to meiosis to spore, right? So some are there in that these 2 haploid cells immediately results in diploid. So इसमें plasmogamy immediately follow the which one? Karyogamy. But in some fungi, 2 classes name given refer Ascomycetes. Which word? Mycetes. Another is a Basidiomycetes. Which are they? Ascomycetes and repeat. Repeat. This two, in this classes, right? ये classes के जो members है, in that intervening stage is there, and that stage is a which one? Dikaryotic stage. N plus N, 2 nuclei are there in a fused condition or separate? Separate, right? Per cell. Such a condition is called dikaryon. Such a phase we call dikaryophase. Clear? Understood this? Yes or no? नहीं, वो complete, right? Next one. Later the parental nuclei fuse. Yes or no? First dikaryon phase is formed. Yes or no? Clear है? Link करिए वापस से. Dikaryote phase is there. Dikaryon phase meaning how many nuclei? 2 nuclei. 2 nuclei from different fungal hyphae, right? So now this nuclei, once the dikaryon phase over, this nuclei will that leads to karyogamy, means they fuse. So parental nuclei now fuse and the cells become diploid. Yes or no? Zygote, diploid. The fungus formation fruiting body in which the which division occur? Reduction division is the another name of meiosis, right? Meiosis is the another name of reduction division, because number of chromosome क्या हो जाएगा? Half. Number of chromosome become half, right? Leading to formation of which spores? Haploid spores. Once the spores liberated outside, haploid spores है, right? These spores, from these spores, as and when germination occur, so again the fungal hyphae will be formed. तो ये fungal hyphae haploid होंगी या diploid? Haploid. वापस से same condition जब sexual reproduction होगा.
cycle will repeat. Clear? Yes or no? Link हो रहा है? Sure? Anyone have a doubt? Pause. Here, to clear the basics over here, one more, that's a life cycle is given. जो अभी dikaryon stage learn किया, for that. First, we understand this thing, that can you make out this is for blue color nuclei and this one for red color. So two compatible filament hyphae, they come close to each other and leads to what? Arrow देखो, plasmogamy. Plasmogamy है, plasmogamy cell plasma membrane is fused and by that way over here plasmogamy जैसे ही complete होगा, which stage will be formed? Dikaryon. Here the dikaryon stage is there. ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेंटर, हर एक में देखो टू न्यूक्लियाई है, राइट? फ्रॉम बोथ द साइड्स दे कैन एबल टू ग्रो. टू फिलामेंट्स आर देयर, राइट? डजंट मीन कि एक ही प्लेस पे प्लाज्मोगैमी होगा. मल्टीपल प्लेसेस आर देयर, ओवर देयर प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस. क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक प्लाज्मोगैमी यहाँ पे हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, राइट? ये वाला यहाँ से फिलामेंट भरा है, दिस वन फॉर्म फिलामेंट लाइक दिस. एंड इन द टॉपमोस्ट सेल स्टिल कौन सा कंडीशन है अभी भी? टॉपमोस्ट सेल डाइकैरियोफेज. डाइकैरियोफेज over here that leads to formation of zygote will undergo meiosis and ultimately how many spores? Four spores are formed. यहाँ तक हमने लर्न किया है, yes or no, right? Which two classes are there for that? Ascomycetes and in ascomycetes, you know sexual spores name ascomycetes के ऊपर से. तो in ascomycetes sexual spore which one develop? Ascospore. तो यहाँ पे spores बन गए, yes or no? But still these are not ascospore. कैसे अभी? One more that's a round of division is needed. That is mitosis. Which one? Mitosis. So as and when four spores are formed by meiosis, now this spore will undergo what? Mitosis. 1 to 2, 2 to 4, 4 से कितने फॉर्म हो जाएंगे? 8. So how many spores now will be formed? 8. And this 8 are now we call they are ascospores. So in ascomycetes, in one ascus, one fruiting body, how many ascospores will be formed? 8. Single ascus में मिलेगा 8. Clear? In single ascus, this fruiting body structure, we get how many ascospores? 8. Understood? Yes or no? Clear? Now, repeat यहाँ से. This is the topmost cell in which dikaryon phase, and that dikaryon phase now over here karyogamy. Karyogamy leads to formation of zygote will undergo how many spores? 4 will undergo how many? 8 ascospores are formed, right? And these 8 ascospores released out from this ascus and means liberated outside and germinated into new fungal filament hyphae structure. Clear? This is their sexual reproduction. Next, asexual reproduction. Ascomycetes के लिए which one? Asexual reproduction that occurs through the, ये अपने कोनिडिया आया था कहीं पे, है ना, कोनिडियोस्पोर. तो सिंपल, ये डिटेल में हम एस्कोमाइसिटिस के साथ ही करेंगे कोनिडिया. बट राइट नाउ कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड इफ एस्कोमाइसिटिस आस्क नेम ऑफ द सेक्सुअल स्पोर? एस्कोस्पोर. नेम ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर? कोनिडियोस्पोर और कोनिडिया. कोनिडियोस्पोर और कोनिडिया. समझ में आया? यस और नो? दिस साइड क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता? यस और नो? फॉल्स? हाँ,
द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, क्या लिखा है? Morphology meaning external features, external structure of mycelium. What is mycelium? Network of hyphae. That structure appearance. Network of hyphae. Second given, that is mode of spore formation. जैसे ascomycetes क्या फॉर्म करता है? Ascospore है ना, sexual spore, that is ascospore. वैसे ही हम basidiomycetes करेंगे तो उसमें basidiospore. So how they form this thing? Third is a fruiting body. कौन से different fruiting bodies form or in which these spores are developed? These three criteria. Remember, first criteria, morphology of the mycelium. Second criteria, mode of spore formation. Third criteria, fruiting body formation. These are the basis for the division of kingdom fungi into various classes, right? Kingdom divisible into different classes on the basis of which three criteria? First, mycelium meaning that basically hyphae से बना है. तो ये morphology क्या है? It can be septate, it can be aseptate in this way, right? Next one, or it can be, wait, that mycelium जो है, it can be branched also, it can be unbranched also, right? चलिए, next feature given, that is mode of spore formation, and third fruiting body. Spore जहाँ पे form होते हैं, that's the fruiting body. This line, remember for the MCQ, these three aspects are needed to divide the kingdom into 4 classes. Now this is the kingdom fungi. Here which condition is given? Aseptate mycelium, meaning septa is absent. Uninucleate condition? Multinucleate condition. And that hyphae, another name? Cenocytic. Which one? Cenocytic hyphae, right? So जहां पे भी those fungi, right? आपके सामने 10-15 फंगस है, उसमें से जिसमें भी aseptate mycelium है, which mycelium is all will belong to which class? Phycomycetes. Which one? Phycomycetes. Which one? Phycomycetes. Okay, that we call the which one? Phycomycetes. बोलिए, clear है? So first fungi in that the aseptate mycelium meaning cenocytic hyphae. जितने भी आपके पास 10 है, उसमें से जिसमें भी आपको क्या मिले? Aseptate mycelium. That all belongs to Phycomycetes class. वो members किसके हैं? Phycomycetes. Clear? Second, septate mycelium. एक था aseptate, दूसरा क्या है? Septate. Septate में first class कौन सा है? Ascomycetes, second Basidio and third Butro. Septate mycelium 10 में से 3 में आपको aseptate mycelium मिला, तो वो 3 किसको बिलोंग करेंगे? aseptate मिला तो किसको बिलोंग? Phycomycetes, right? Remaining 7 belongs to either Asco, Basidio और Butro. अभी उसको भी कैसे सेपरेट करें? जिसके अंदर क्या फॉर्म होता होगा? एस्को स्पोर्स. वो किसमें चले जाएंगे? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आया था ना, राइट? सेकेंड, जिसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते होंगे वो सारे बेसिडियोमाइसेटिस, राइट? एंड ये जो है इम्परफेक्ट फंगाई है, इसके ऊपर अभी स्टडी चल रहा है, राइट? ड्यूट्रोमाइसेटिस. विच वन? ड्यूट्रोमाइसेटिस, राइट? विच वन? ड्यूट्रोमाइसेटिस. फर्स्ट क्लास इज अ Phycomycetes, second, third, fourth, first, second, third, fourth, repeat, first, second, third, Basidiomycetes. बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? राइट? Now we are going to learn about first class of the kingdom fungi, Phycomycetes, right? Mycetes, mycelium, mycetes, mycetes. So mycetes word when you refer ना, click होना चाहिए. किसके बारे में बात हो रही? Fungi, mycelium.
क्लियर? सो फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस तो समझ में आता है, दैट इज व्हाट? फंगाई. फाइको टर्म रिफर फॉर algae. Phyco term refer for algae. So here phycomycete is another name algal fungi. अभी इसको algal fungi क्यों बोला? It does not possess chlorophyll. वो algae के जैसा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, they are heterotrophs. But algae के जैसे इसमें spores form होते हैं. One of them is a zoospores. Which one? Zoospores. And इसके जब spores liberate होते हैं, they need the moist condition water over the, right? They need which one? Moist condition water surrounding that, which again that is the main habitat condition for algae also. तो certain features जो थे वो algae के जैसे हैं. That's why एक तो water condition चाहिए. सेकेंड, जो स्पोर्स algae में फॉर्म होते हैं ना, जूस्पोर्स, वैसे ही ये फंगस मेंबर में भी हो रहे हैं, जूस्पोर्स, right? So that's why they belong to the which Phycomycetes we call algal fungi, right? Algal fungi meaning they perform photosynthesis? No. Certain features look like what? Algae. One of them feature is a which one? Zoospore. अभी हम फंगस में जूस्पोर्स लर्न कर रहे हैं ना, वैसे हम जब algae लर्न करेंगे ना तो उसमें भी जूस्पोर्स आएंगे. Clear? Second, remember they, as and when their spores are formed, spores liberate. They don't need dry habitat. They need what? Watery. That's a aquatic medium, but not fully water, moist condition, right? So that's why they belong to which one? Over here, Phycomycetes, green algal. Algal fungi means algal fungi. Clear? Yes or no? Now, सिंपल एक चीज बोलूं आपको, वो मॉइस्ट का अंडरस्टैंड करने के लिए. घर पे राइट, यू नो, रोटी के ऊपर आपने बोला था ना, आपको दिखता है फंगस, ब्रेड के ऊपर, है ना, रोटी ब्रेड. तो ब्रेड भी बेक किए हुए होते हैं, राइट? और उसको प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद एक्चुअली पैक करना चाहिए. यस और नो? राइट? और ऐसे ही जस्ट कंडीशन में रैप रहेगा, हम यूज नहीं कर रहे. हर एक का एक एक्सपायरी पीरियड होता है ना. उसके अलावा हम जब उसको यूज करने जा रहे, वी ऑब्जर्व दैट व्हाट दैट्स अ फंगस ग्रोन ऑन दैट. तो वहां पे वो क्लोज कंडीशन में वहां पे क्या हो रहा है? मॉइस्चर डेवलप होता है. क्या डेवलप होता है? मॉइस्चर. सेम रोटी के लिए भी वही है, राइट? रोटी के लिए भी वहां पे हम क्लोज कंडीशन में रखते हैं, उसमें मॉइस्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. एंड ड्यू टू दैट दिस फंगस ग्रो ओवर देयर. दिस फंगस ग्रो ओवर देयर, राइट? दैट स्पोर्स. स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें दिखेंगे भी नहीं. हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट, टाइट रखते हैं, तो वो टाइम पे वो स्पोर वहां पे आ जाए और ग्रेजुअली हम उसको देखे भी नहीं तो जर्मिनेट होके क्या हो जाता है फिर उसमें फंगल फिलामेंट, राइट? सेम थिंग पिकल्स के ऊपर भी आपको दिखाई देता है. आपको घर पे जनरली बोलेंगे कि पानी वाला हाथ मत लगाओ. यस और नो? है ना. अदरवाइज उसकी वजह से वहां पे आप मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हो, है ना. पिकल्स बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने नहीं बनाया होगा बट देखा तो होगा ना. मैंगो को ऐसे ही यूज करते हैं या उसको ड्राई? क्यों ड्राई? मॉइस्चर नहीं चाहिए. अगर वो उसमें प्रॉब्लम हुआ, मॉइस्चर रह गया, तो उसमें क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा? फंगस, राइट? क्या डेवलप होगा? फंगस. समझ में आया? राइट? सो फर्स्ट हियर द क्लास, दैट इज द विच क्लास ओवर हियर? Phycomycetes algal fungi. क्लियर है वहां से विजिबिलिटी? नाउ सो हैबिtat फर्स्ट. हैबिtat मीनिंग habitat, the place where organisms live, right? This classes member need which one? Aquatic means not fully what? Fish के जितना नहीं, right? Aquatic and on decaying wood in moist and damp places or obligate parasites on plant. Obligate meaning compulsory. Obligate meaning what? Compulsory. इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में ही ग्रो करते हैं ऑन प्लांट्स, राइट? सर्टेन उसके होस्ट है, उसी के ऊपर वो ग्रो करते हैं. अगर वो नहीं मिला तो वो नहीं ग्रो करेंगे, राइट? सो ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या है? कंपल्सरी. वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन पैरासाइटिक फॉर्म में ही रहते हैं.
कुछ जो होते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं. क्या होते हैं? ऑब्लिगेटरी का ऑपोजिट टर्म है फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेटरी का ऑपोजिट टर्म क्या है? ये कंपलसरी, ये ऑप्शनल. होस्ट मिला तो पैरासाइटिक, अदरवाइज नॉट. क्लियर? सो हैबिटेट फर्स्ट यू शुड लर्न. हैबिटेट फर्स्ट aquatic, decaying wood in moist condition, right? Which condition? Moist condition. Even damp places and certain time we observe obligate parasites on plants. This phycomycetes we have divided. कौन सा mycelium होना चाहिए? Aseptate. So mycelium is aseptate and in aseptate है तो सिनोसाइटिक. विच वन? सिनोसाइटिक. ये लाइन सेपरेट आएगा माइसीलियम में, वो हैबिटेट में नहीं है. राइट? न्यू पॉइंट करना बाकी रह गया. सो माइसीलियम इज व्हाट टाइप ओवर हियर? एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. क्लियर? नेक्स्ट वन डायरेक्टली गिवन द रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual reproduction. Damp places. Huh? Which one? या सीवेज के साइड पे जो होता है ना प्लेसेस, अभी गुजराती में, राइट? दैट्स नाउ asexual reproductions. In that some members form what? Some member forms aplanospore. ये न्यू ऐड हुआ, राइट? Some members form zoospores. Some members form, repeat, some members form and some form एप्लानोस्पोर. राइट? आपके जो ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर जो फंगस लगते हैं ना, that belongs to this category, Phycomycetes. राइट? बिकॉज मैंने बोला ना मॉइस्चर हो जाता है तभी वो ग्रो करते हैं. राइट? सो नाउ say this. Here one of the example is given. Right? इसका शॉर्टकट जो है, इसमें 3 एग्जाम्पल है. कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल. राम उसका शॉर्ट फॉर्म है. राइट? क्या? राम. R for rhizopus. R for rhizopus. A for albugo. A for albugo and mucor. M for mucor. राइट? M for mucor. तो 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं. तो शॉर्ट में राम के जैसे याद रखना. राम इन Phycomycetes. राम इन Phycomycetes. R stands for rhizopus. A albugo. M mucor. Mucor. Mucus नहीं लिखना है. क्या है? Mucor is a fungus. Right? So now first understand over here that एप्लानोस्पोर एंड जूस्पोर, ये मेन बेसिक है. यही चीजें नेक्स्ट चैप्टर में भी लर्न करनी. राइट? सो नाउ हियर द फंगल हाइफे माइसीलियम सेप्टेड, aseptate. So now I am making aseptate. So multinucleate condition, yes or no? Yes. इसका ब्रांच पैटर्न है तो इसमें भी multinucleate condition. Now next, from this over here a stalk like structure is formed. At certain places क्या form होगा इसमें से? Stalk like structure. And on this stalk like structure one bag like structure is formed in which the spores are developed. Right? Bag, right? In which the spores are developed. तो ये जो bag like structure है that we call sporangium. Which word? Which word? Repeat. Sporangium. Inside that what is formed? Spores. Sporangium के inside spores. Right? Pause. Right? Wait, pause. Huh? So this structure we call sporangium, and inside the sporangium what is formed? Spores are formed. Right? Now sporangium, in that if this type of structure, देखिए एक ये structure है and another structure it looks like this. Right? These two are what? जो मैंने ऊपर में ना small ऐसे flagella. These are what? Small flagella. These are small what? Flagella. Right? इसके microscopic structure है तो flagella इतने small ही इतने ही है. Right? Now, so one type of spores are there. These are
मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल, and this type of spores are motile. Right? Now, non-motile spores we call aplanospores. Non-motile, one more thing. ये सिंगल हाइफे से डेवलप हो रही है, टू हाइफे आर नीडेड. तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, asexual reproduction, one type of spore is a which one? Non-motile? Aplanospore. Which one? Aplanospore. And again here also single hyphae. This is the zoosporangium, in which this biflagellated zoospores are formed, and this zoospores, flagella hai, flagella helps in that gives motility. Here the swimming. So near the water area, these zoospores are released. These zoospores are released. Clear? And gradually after some time, from these zoospores and these aplanospores, new mycelium, new fungal filaments grow, process start. Right? So remember here first, asexual reproduction either by formation of or by formation of, clear है, which is the non-motile? Aplanospores. And the motile? Both spores are formed in which structure? Sporangium. वो बैक स्ट्रक्चर क्या है? Sporangium. Yes or no? That is formed inside or outside that makes inside. inside जब डेवलप होते हैं तो उसकी ओरिजिन को बोलते हैं एंडोजीनस. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंडो मीनिंग inside. Endogenously produced in sporangium. Endogenously produced in sporangium. बोलिए, asexual reproduction की lines clear? Sure. How many types? Quickly. Two. Which are they? Zoospores and aplanospores. Zoospores are non-motile. Aplanospores are both types of asexual spores are produced in sporangium exogenously. Which word? Endogenously. यहाँ तक clear है? Sure. Now the next one, that is sexual reproduction. Which one? Sexual reproduction. Sexual reproduction डाइकैरियो इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा. You know डाइकैरियो में कौन से दो क्लासेस लर्न किए? उसमें दिया था टू क्लासेस नेम, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिलस. सो इसमें दैट्स this dikaryophase is absent. In Phycomycetes, dikaryophase is absent. Dikaryophase that present in which two? Ascomycetes and Basidiomycetes. Here absent. Clear? तो यहाँ पे क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे? टू हाइफे नीडेड और वन हाइफे? सेक्सुअल बोल रही हूँ. टू. सेक्सुअल मीनिंग गैमेट्स, टू पेरेंट्स, राइट? सो टू हाइफे नीडेड. टू हाइफे, उसमें फर्स्ट इवेंट क्या होगा? प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी के बाद डायरेक्टली इसमें क्या हो जाएगा? कैरियोगैमी, राइट? नेक्स्ट कैरियोगैमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ zygote. Zygote will undergo and form four haploid spores. ये four haploid sexual spores जो है, right? That as and when this structure will degenerate, these spores will liberate outside and form the new fungal filament. Right? तो sexually हर एक में new fungal filament will be formed. Right? So नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ. यहाँ पे ये स्पोर्स डेवलप हो गए, डन. क्लियर? सो हर एक में कुछ ना कुछ माइनर वेरिएशन है, तभी तो वो डिफरेंट क्लासेस में है, अदरवाइज सेम नहीं होते, है ना? सो नाउ Phycomycetes, in that the sexual reproduction, which word is mentioned? Zygospore. Basically it's a zygote, simple, right? As and when zygote is formed, yes or no? As and when which structure? Zygote is formed. Zygote is a haploid or diploid? Zygote is a haploid or diploid?
इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या है, नॉट मेंशन इन योर बुक, जस्ट फॉर योर नॉलेज. वंस द प्लाज्मोगेमी डन, which process occur? Karyogamy. Karyogamy will form zygote. Zygote, it will remain for so many days, months, as it is, right? And now we call it's a zygospore. Zygospore, उसके ऊपर टफ कवरिंग आ जाता है. क्या आ जाता है? टफ कवरिंग. जाइगोट से ही क्या बन जाता है? जाइगोस्पोर. जिस जाइगोट है तो टफ कवरिंग नहीं है, बट जैसे ही उसके ऊपर टफ कवरिंग बन गया, नाउ वी कॉल जाइगोस्पोर, राइट? टू रेजिस्ट एक्सट्रीम एक्सटर्नल कंडीशंस. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, मीनिंग ये जो हार्ड कोट फॉर्म हुआ है, दैट विल बी रप्चर, एंड इन दैट मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड वहां पे उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट. क्लियर? सो फाइकोमाइसिटिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा नेम दिया है? जाइगोस्पोर, विच इज डिप्लॉइड, बिकॉज वो जाइगोट से डायरेक्टली फॉर्म होता है. रिमेंबर, बाकी सारे स्पोर्स कितने भी फॉर्म हो, वो सब कैसे होते हैं? हैप्लॉइड. क्लियर? यस और नो? एस्कोस्पोर्स बने थे, वो भी क्या थे? हैप्लॉइड, राइट? बट जाइगोस्पोरिक है, वो क्या है? डिप्लॉइड. अंडरस्टूड? श्योर? नाउ नेक्स्ट, sexual reproduction, zygospores are formed by fusion of two gametes. Gametes are similar in morphology. अभी gametes में यहाँ पे 3 words दिए हैं, isogamous, anisogamous and oogamous, right? So first understand what is iso. Isomer सुना है? isomer chemistry में, yes or no? iso का मीनिंग क्या होगा? सेम और डिफरेंट? सेम. आपको सिर्फ डायग्राम को ही ऑब्जर्व करना है. दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, राइट? सी दिस टू, कलर पे मत जाना. सो बोथ द गैमेट्स आर देयर, एंड बोथ द गैमेट्स आर व्हाट? मोटाइल और नॉन मोटाइल? मोटाइल. सेम शेप, सेम साइज एंड सेम दैट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, राइट? सो बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल. Both the gametes are motile, remember. So that condition we call isogamous. ये बेसिक है, प्लांट किंगडम में भी आने वाला है, राइट? आइसो का मीनिंग है सेम, गैमस गैमेट्स, सेम साइज, राइट? मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली तो नहीं, बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमेट्स वी कॉल isogamous. Now here what is different? One is larger, other is smaller, right? One is larger, other is smaller. Both are flagellated, no doubt, but size में variation आया. Anisogamous. Which one? Anisogamous. And third one is a oogamous. Oogamous in that this is the large, motile or non-motile? This is the generally we call female gamete. Which gamete? Female gamete. And this one is a male gamete, small and motile, right? So if gamete fusion occur, right, or if fusion occur between large non-motile and small motile gamete, that's the which type? Oogamous. If fusion occur between, like the gametes, both are in different size but both are motile, anisogamous. Same size and motility, isogamous. So different fungus form different kinds of this gametes. Motile भी कर सकते हैं, नॉन मोटाइल, राइट? एक मोटाइल नॉन मोटाइल ऐसे है तो वो oogamous में चले जाते हैं. दोनों मोटाइल बट डिफरेंट इन साइज, अनाइसो. एवरीथिंग इज सिमिलर, isogamous, right? So fungal body can form either iso, aniso or oogamous type of gametes. Understood? Good. Members of Phycomycetes, either they can form what kind of gametes? और oogamous. समझ में आया? ऐसा नहीं कि म्यूकर है तो म्यूकर तीनों टाइप करेगा, नो. वन मेंबर, वन काइंड ऑफ गैमेट. क्लियर?
एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल राम याद रखोगे तो फर्स्ट राइजोपस, राइजोपस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है दैट वी कॉल राइजोपस, राइट. नेक्स्ट सेकेंड इज अ ओके अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो दैट इज यू नो मस्टर्ड राई, in Gujarati we call rai, black color seeds we used for cooking, yes or no, right. So mustard का जो plant है उसके ऊपर ये parasitic, you know, obligatory parasite word is given, right. So albugo fungus you can observe on this which plant, mustard, right. Mustard plant, on that which is the parasite, albugo, right. Albugo is a fungus, mustard is a plant, right. So albugo fungus grows as a parasite on mustard. It derives the nourishment from the mustard, right. Last one, M for mucor. Okay, M for which one? Mucor. So rhizopus, albugo, and third one is a mucor. These are the different fungus are there. म्यूकर ऐसे उसके अरेंजमेंट्स है. तो म्यूकर में स्पेसिफिकली क्या है? एप्लानोस्पोर्स, राइट. नोबडी विल आस्क स्पेसिफिकली क्या है, आपको इन जनरल एटलीस्ट आना चाहिए. दैट इज एसेक्सुअल स्पोर्स आर व्हिच वन? जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर वी कॉल zygospore, which is haploid or diploid? Diploid, right. Next one, examples of Phycomycetes, rhizopus, albugo, mucor. Albugo is a parasite. Yes. On which plant? Mustard. Which is the bread mold? Rhizopus.